दो पॉइंट्स हैं ए और बी और मेजर्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये सब ने आपने ओ लेवल से सीखा हुआ है, सही है। आप क्या करते हैं, कंपास लेते हैं, कंपास को जो है वो यहाँ पे रखेंगे एंड you open the compass more than half the distance of the line AB and you draw an arc like that. Then you take this same compass, you put your compass at B and you draw another arc like that. Where these two arcs meet is the perpendicular bisector. Right? So you should know how to draw it. I'm not teaching you O-level math. In case you want me to teach you O-level math, then you'll have to wait. Okay, so everybody should know how to draw a perpendicular bisector. Perpendicular bisector कैसी line होती है? It has the points are equidistant from both A and B. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी because we still have a bit of time, I'll just write down the theory. If ये लिख लें, is the shaded region okay. ये लिख लें because we'll run out of time. I can't. This is from yesterday. हम जो है वो complex numbers का दूसरा लोकस कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा जब दोनों साइड पे मॉड्यूलस होगा, सही है। अब ये कहता है कि ऑन एन आर्गन डायग्राम स्केच द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आप स्केच बना लें, आप ये छोड़ दें, इक्वेशन नहीं बनानी मुझे। लेट्स जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ sketch of this. Okay, A was 4 minus I. So A is 4 minus I and B is 5 minus 5I. 4 minus I यहाँ पे आएगा, and now I'm trying to draw the perpendicular bisector of this. This is the line. इसका perpendicular bisector draw कर लेते हैं. Okay. Okay, this is the perpendicular bisector, and what अब इसकी interpretation क्या होती है कि any point on this line, any point on this line, सही है, will have the same distance from this point and this point. सही है, this point is 4 plus I, 4 minus I, and that is what the locus represents. कि when I'm saying कि दो मॉड्यूलस इक्वल है यानी दो का डिस्टेंस इक्वल है, because हमने पढ़ा था कि मॉड्यूलस जो वो डिस्टेंस मेजर करता है. So I can say that any point on this line is equidistant from this point and this point. What I also want to show you on a side note is this, कि अगर सवाल जो है वो ऐसा होता, let me just copy this entire thing.
अगर सवाल जो है वो ऐसा होता और ये इक्वल्स टू की जगह लगा होता ग्रेटर देन का साइन, तो आप किस साइड पे शेड करते? दैट्स द बिगर क्वेश्चन. व्हाट साइड वुड यू हैव शेडेड एट? एनीवन? एनी आइडियाज? किस साइड पे शेड करना चाहिए? द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बनेगी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही, बट अली जमील इज टेलिंग अस कि राइट हैंड साइड पे. अली क्यों? अली क्यों? इट्स ग्रेटर. अली जान कह रहा है, अली जान लेफ्ट नहीं होगा या होगा? बस. सी द आइडिया इज कि आपने ऐसी साइड बतानी है जिसका डिस्टेंस इससे कम हो और इससे ज्यादा हो. सही है. तो आई एम गोइंग टू शेड ऑन दिस साइड. जिस साइड पे पॉइंट कर रही होती है इनइक्वालिटी उस साइड पे शेड करते हैं. सही है. द शेडिंग इज टुवर्ड्स द साइड ऑफ द पॉइंट जिस पे लेस देन होता है. यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था. मैंने यहाँ पे लिखा था द लोकस ऑफ z इज द शेडेड रीजन क्लोजर टू a. सो क्लोजर टू a हो जाएगा या क्लोजर टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोजर टू -5i. उस्मान सर्कल तब बनता है जब एक साइड पे मॉड्यूलस हो. दो साइड पे मॉड्यूलस होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. लेफ्ट में होगा. हाँ, तुमने लिखा ऐसे था इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था. अली देखो, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज डिस्टेंसेस है. मैं तुमसे कह रहा हूँ कि z ऐसा नंबर है जिसका डिस्टेंस 5i से लेस है और 4i से ग्रेटर है. तो यहाँ पे चूज करूंगा तो 5i से करीब होगा और 4i से दूर होगा ना, 4 माइनस i से. These are the possible positions of z. कि z can be any number here. उस्मान, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मैंने जो है वो आर्क्स बनाए. कल मैंने ये बताया था कि आर्क्स बनाओगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस तरह वो लेवल्स में बनाते थे. अली, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अच्छा लिख दे तुमने. उस्मान, मैंने पहले ये लाइन बनाई थी डॉटेड और ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई हुई. I can't draw arcs for you on the screen, right? If you want, I can just show you the arcs. So मैं अगर perpendicular bisector draw नहीं करना आती, just watch some YouTube video. It's going to be clear to you. It's not something very challenging. Okay. Okay. This is the next question that we have. Okay, sketch on an argand diagram the loci given by this and this. So yes, Umar, that's what it means. नहीं सुफियान, और से देखो. This one is a circle and this one is a perpendicular bisector. ओके, इसके एक साइड पे मॉडुलस है, दूसरे की दोनों साइड पे मॉडुलस है. तो पहले मैं जरा अपना ग्राफ वगैरह कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ. Fortunately, I don't know why it looks so dark to me today.
ओके, सो 1 + 2i इसका सेंटर हो जाएगा, किसी को इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, दैट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट विथ येलो एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ग्रीन से बना लेंगे. 5 इसका रेडियस है व्हिच इज ह्यूज. 1 2 3 4 5. सही है, दैट्स द फर्स्ट लोकस. ओके ओके उमर. फिर यहाँ पे a क्या होगा, 5 - i होगा, और b क्या होगा, -3 + 5i. ये बात सबको समझ आती है, किसी का इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है. क्या इक्वेट दम टू z -a होता है और z -b होता है, तो मैंने ये दो नंबर्स ले लिए. 5 - i is here and -3 plus right. These are the points A and B, and I want to find the perpendicular bisector of this. I think मेरा circle थोड़ा सा off है, वरना ये दोनों points circle के ऊपर ही आने चाहिए थे. In any case, the perpendicular bisector of this would pass through here, and it's going to be a perpendicular line like that. Right? That's the perpendicular bisector. Now, ये मैंने locus दोनों बना दिए. Sketch on an arc diagram the loci given by this. Okay. It's the second part that I was more concerned about in this question. Okay, show that these loci intersect at the point -2 -i, -2i. What does that mean? How do I prove that to you? Graphically तो मुझे नजर आ रहा है. अच्छा, एग्जाम में आपने कंपास और स्केल से ही बनाने होंगे, वरना उसके बगैर बनाएंगे तो आंसर गलत होंगे आप लोगों के. Okay, let's make sure that you draw this to compass and scale. I haven't been very accurate, but that's what you have to do on the exam. How do I prove the second part? Anyone? किसकी simultaneous equations this one? I don't have a pair of equations right now. Anyone, please, quickly. We have a lot to go on. Alidan, kiska midpoint? I'm asking you for this point. This is nowhere close to the midpoint. See, what I want to show you is कि ये जो मैंने yellow line बनाई है, these are the possible positions of z, right? यहाँ पे सब z आ सकते हैं. ये जो मैंने perpendicular line बनाई है, ये भी these are possible positions of z. Now I'm telling you that ये दूसरा वाला locus है, ये पहला वाला locus है, and this is a common point on both loci. So can I say that this is a value of z that satisfies this locus and that also satisfies that locus? So if I'm talking about a possible value of z, can I simply insert it here and show this to you कि a equals to 5 हो जाएगा? So what I'm going to do is I'm going to write -2 - i. ये bracket open करूंगा. This becomes -3 - 4i. क्या इसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू 5 होता है? मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला ये होता है. Is that equals to 5? Yes, 5 is equals to 5. Therefore, I've proved to you that this point lies on this locus. Similarly, when I'm inserting it on the other equation,
मैं इसको दूसरी इक्वेशन में भी इंसर्ट करके चेक करूंगा. If it balances both equations, then the point lies on that line. उस्मान, वो तुमने जो प्रोसेस बताया उसमें मुझे ना एक्स और वाई लाने पड़ेंगे ना. अब वो द प्रॉब्लम विद दैट इज कि ये इमेजिनरी और रियल की बात हो रही है. आई एम नॉट रियली टॉकिंग अबाउट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. Yes, you can put it like that, but I wouldn't encourage you to do that when you can prove it using complex numbers only. So yeah, and this is a technique that comes in handy later on as well. We'll talk about it again. ये मुझे इसी क्लास में खांसी होती है और ये सारी अली जमील की बद्दुआएं हैं. Usman, yes, it's in the third quadrant. And now Shahid is also बद्दुआएं भेज रहा है Shahid. Okay. In any case, do we all understand this second part? That's what I'm more concerned about. अभी पहला part लोसाए तो बार-बार आएगा. That's the second parts that I wanted to show you. Okay. Is everybody clear?